Assalamu alaikum class, good morning. In today's third session, we are going to discuss about how we can read a file. The already existing file, we want to read it. इससे पहले हमने जो देखा था जी हाउ वी कैन क्रिएट अ फाइल, हमने फाइल क्रिएट की इन ए स्पेसिफिक पाथ में भी और एक बाय डिफ़ॉल्ट पाथ में भी क्रिएट की. देन उसी फाइल का हमने स्पेसिफिक पाथ भी मालूम किया और फिर बाय डिफ़ॉल्ट पाथ भी हमने फाइल का मालूम किया. ये चीज़ें भी हमने डिस्कस की. देन वी लर्न हाउ वी कैन डिलीट अ स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम द स्पेसिफिक डायरेक्टरी और फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी. We discuss that, and then we discuss how we can dump or write a content into the file, either in the existing file or either directly open a file and dump the content same at a time. तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए. तो आज अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, how we can read the existing file from the specific directory. For example, मेरे पास एक फ़ाइल है doc के नाम से और वो मेरे पास मेरे इस पर्टिकुलर पाथ या डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल मौजूद है. तो मैं इस फाइल को कैसे रीड करूँगा, राइट? तो उसके लिए मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा और वो फंक्शन है मेरे पास स्कैनर का. ऊपर खैर वो अगर आप ऊपर वाला कोड देखें तो मैंने वही फाइल को किया हुआ ऑलरेडी, उसके पैकेजेस को इंपोर्ट हमने किया है. तो एक स्कैनर, ठीक है जी. तो स्कैनर टाइप की मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की, राइट? वो जो कि ऑलरेडी किसके अंदर है, मेरे पास ऑलरेडी फ़ाइल के अंदर मौजूद है. तो मैंने उसको स्कैनर का एक फ़ंक्शन यूज़ किया. स्कैनर की एक फ़ाइल को मैंने यहाँ पर अगर आप यहाँ देखें तो स्कैनर की फ़ाइल ये रही. तो ये स्कैनर की फ़ाइल भी मैंने इंपोर्ट की हुई है एज अ इनपुट. तो मैंने वो भी किया है. अब इस स्कैनर टाइप डेटा टाइप का एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया विद द नेम ऑफ माई रीडर. देन उस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं हैज़ नेक्स्ट लाइन फाइल को रीड करना चाह रहा हूँ, उसके कंटेंट को रीड करना चाह रहा हूँ, कितना कंटेंट पड़ा है. तो मैंने एक फ़ंक्शन यूज़ किया. ये फंक्शन जो है वो किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, स्कैनर के अंदर एग्जिस्ट करता है. और उस स्कैनर के अंदर हैज़ नेक्स्ट लाइन का फंक्शन मैंने इसके ऊपर वाइल का लूप लगाया. तो जब तक मुझे नई लाइन मिलती रहेगी तब तक मैं इसको रीड करूँगा. खैर आपने लूप लगाया, यू नो वेरी वेल अबाउट दी लूपिंग. सो यहाँ मैंने कहा जी कि एक मैंने स्ट्रिंग का डेटा डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल डेटा टाइप कुछ भी है, वेरिएबल का नाम क्या डिक्लेयर किया और उसको मैंने माय रीडर ऑब्जेक्ट की मदद से नेक्स्ट लाइन का एक फंक्शन रीड करके उसको असाइन कर दिया और यहाँ उस डेटा को मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया. और उसके बाद एज़ यूजुअल मैंने उसी फाइल को क्या किया, क्लोज भी किया, क्योंकि पहले फाइल क्या की हमने, ओपन की. तो लेट्स सी इस फाइल के अंदर क्या है. तो मैं देखता हूँ, मैं इसको कंपाइल करता हूँ और यहाँ देखें ये मुझे इसने बोल दिया, उस फाइल को उसने ओपन किया और हर लाइन को उसने 3 लाइन थी तो तीनों लाइन के कंटेंट को रीड करके उसने आपको दे दिया. सो दिस इज़ हाउ वी कैन रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल. आई होप इट्स क्लियर टू यू पीपल. उसके साथ एक चीज़ हम और ऐड करने जा रहे हैं इसी के साथ कि व्हाट इफ़ वी वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फाइल. फॉर एग्जांपल, where do we have a file, mean in which directory or in which folder we have a file, what is the path of the file, right? What are the attributes of the file, means either do we have permission to read a file or do we have permission to write a file, or yes or no. And then we want to know the name of the file and we want to know the size of the file, right? So these all things are the part of the information about a file. So for that, see here we have a code. Okay, so same we have a class info over there, be important. So what we have a file, and this we know very well that a file we have in this particular path. If this file exists, so I'm over here applying a condition on the function exist function क्या करता है, मैं आपको बता चुका हूँ. ये चेक करता है कि आइदर ये फाइल मेरी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करती है नहीं करती. इफ़ इट एग्जिस्ट देन व्हाट टू डू, गिव मी द नेम ऑफ द फाइल विद द प्रिंट करो फाइल का नाम विद द हेल्प ऑफ द गेट नेम. देन प्रिंट करो पर्टिकुलर एब्सोल्यूट पाथ विद द हेल्प ऑफ द गेट एब्सोल्यूट पाथ फंक्शन. देन मालूम करो कि क्या उस फाइल के अंदर हमें परमिशन दी गई है कुछ राइट करने की, तो विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन कैन राइट. देन
find out, do we have a permission to read a particular file, yes, no, which we can find out with the help of the can read, and then the size of the file, which we can know with the help of a function length, right? If all, then okay, else file doesn't exist. So let me compile this file and see the information. तो देखें, फाइल का नाम get name, where is the path, absolute path is this. So do we have a permission to let me compare again. Do we have a permission to this read? Yes. Do we have a permission to write? Yes. And what is the size of a particular file? It's 107 bytes. So this is about the information of a file, right? Hope to see you for the next tutorial.